इस समाज में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें याद करना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। प्रोफेसर ईश्वर शर्मा शिक्षक, पर्यावरणविद, लेखक और मानव अधिकार कार्यकर्ता थे। वे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नारनौल में पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में लेक्चरर थे। उन्होंने एनवायरनमेंट साइंस में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी। इसके साथ ही उन्होंने कंप्यूटर साइंस में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और हरियाणा राज्य में तकनीकी क्षेत्र में एक अपना अलग मुकाम हासिल किया। उन्होंने पर्यावरण व कंप्यूटर साइंस से संबंधित पुस्तकें भी लिखी, जो हरियाणा के कॉलेज अध्ययन में आज भी कोर्स वर्क का हिस्सा है। 2000 में उन्होंने नारनौल क्षेत्र में महिलाओं के कंप्यूटर शिक्षा को लेकर बड़ा मूवमेंट शुरू किया था। वे ह्यूमन राइट्स व पर्यावरण के मुद्दों पर स्थानीय स्तर से लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक लड़ चुके हैं। उन्होंने माइनिंग को लेकर लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। 5 मई 2014 को एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। वर्ष 2018 से हम हर वर्ष उनकी स्मृति में व्याख्यान आयोजित करते हैं। इस कड़ी में पहला स्मृति व्याख्यान उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संतोष हेगड़े जी ने दिया था। अध्यक्षता श्री NK सक्सेना, वरिष्ठ IAS पूर्व सदस्य योजना आयोग ने की थी। दूसरा स्मृति व्याख्यान श्री प्रकाश सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल ने दिया था। तीसरा स्मृति व्याख्यान जाने माने भाषाविद प्रोफेसर गणेश देवी ने दिया था। चौथा व्याख्यान प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जी ने दिया था और पांचवा ये स्मृति व्याख्यान आज सैम पित्रोदा जी देने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। इसी के लिए मैं यहाँ पे सैम पित्रोदा जी का भी एक संक्षिप्त परिचय दूंगी, क्योंकि हम सब उनके कार्य से वाकिफ हैं, पर ये स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे उनका एक संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। डॉक्टर सैम पित्रोदा दूरसंचार इंजीनियर, आविष्कारक एवं उद्यमी है। वे भारत में सूचना व संचार क्रांति के जनक हैं। देश में मोबाइल और कंप्यूटर क्रांति भी इन्हीं की देन है। 1984 में उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, वाटर लिटरेसी, इम्यूनाइजेशन, डेयरी और ऑयल सीड से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशनों का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत के दूरसंचार आयोग की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने एक लंबे समय घरेलू और विदेशी दूरसंचार नीति को दिशा देने का काम भी किया। वे नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है। उनके काम की और उनके सम्मान की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके बारे में आगे अश्वनी शर्मा जी रोशनी डालेंगे, जो इस व्याख्यान माला के संयोजक हैं। इससे पहले हम चाहते हैं, क्योंकि अश्वनी जो है घुमंतों के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, तो अश्वनी की ये इच्छा थी कि हम सैम पित्रोदा जी का स्वागत जो है लोक कलाकारों के जरिए करें। तो यहाँ जैसलमेर से हमारे साथी लोक कलाकार साथी जुड़े हुए हैं। ये राकेश भाट और उनके साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कठपुतली कला से डॉक्टर सैम पित्रोदा का स्वागत करें। आपके हवाले मंच। राकेश जी, आप कठपुतली के जरिए सैम सर का स्वागत करें। आप कठपुतली का वो दिखाएं सैम सर को, अपना गीत और जो संगीत के जरिए।
इसके एक तो अपना परिचय दीजिए राकेश जी, आप अपने साथी कलाकारों का सभी का परिचय दीजिए बाबा को। जी नमस्कार सर जी, मैं राकेश बहुत बहुत धन्यवाद। मामुद्दीन जी, कैलाश राम भाट, और हम प्रोफेशनल पपेटियर हैं। शुरू से हमारा खानदान ऐसा है, पपेट का डांस करवाना, शो करवाते हैं हम। पहले गांव-गांव में जाते थे और इनके कठपुतली के माध्यम से इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में बताया, की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानियां बताया करते थे। लेकिन समय चेंज होने से ये कलाएं मर रही है, अंतिम पड़ाव पे है, क्योंकि इसमें कोई सहयोग नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है। और अभी धीरे धीरे ये कोरोना काल से और सबसे सब ये कला खत्म हो रही है, इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा और खत्म हो। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी और आपकी संपूर्ण टीम को। आपने बहुत ही उम्दा अपनी कला का प्रदर्शन ये करके दिखाया। बाबा ये भाट समाज से आते हैं, जो घुमंतू समाज है भाट। और ये बाबा शायद आपका वीडियो वो हो गया बाबा उसमें। हाँ जी बाबा। तो ये भाट समाज है और बाबा ये कठपुतली नचाते थे। तो पहले गांव गांव में जैसे जाते थे, कठपुतली के खेल के जरिए इतिहास को बताना, उनकी स्टोरी बताना, गीत संगीत, ये सब तमाम विरासत को अपना लेकर के चल रहे हैं आज भी। और इनके सवाल को बाद में हम लेंगे उसके अंदर।
और आपका बहुत ही धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा का उसी लोक कला के जरिए आपने उनका स्वागत किया। और आज हमारे बीच दुनिया के महान आविष्कारक, युग दृष्टा और एक सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन इंसान डॉक्टर सैम पित्रोदा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं हम सभी साथियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इतिहास में कुछ ब्रेक पॉइंट्स आते हैं जहां से दिशा तय होती है कि हिस्ट्री अब किधर जाएगी, ये उसके ब्रेक पॉइंट से तय होता है। तो एक ब्रेक पॉइंट हमारा इतिहास में 84 में आता है, जब बाबा उस क्षेत्र को एक क्रांति के शुरुआत करते हैं, सूचना क्रांति के साथ, और उसके साथ विभिन्न मिशन लेकर के चलते हैं साथ में। तो वो इतिहास को बदलने में, उस इतिहास को भूमिका देने में, जिनको हम बोलते हैं कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, की आधुनिक भारत के निर्माता, वो केवल सूचना क्रांति के जरिए नहीं, उनके तमाम जो काम रहे, वो रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने के संदर्भ में हो या शिक्षा से जुड़े उनके काम हो, नेशनल नॉलेज कमीशन के साथ में हो। मैं जब से चीजों को देखने समझने लगा, तब से मैं बाबा से जो परिचय रहा मेरा, जितने सालों में मैं उनको देखना समझना चाहा, उनसे मिलना रहा, बातचीत रही उनकी, we had never talked about anything related to politics। हमने आज तक कभी राजनीति पे कभी कोई बात हमने नहीं करी, और ना ही बाबा का ऐसा मिजाज है, ना ही मेरा कोई ऐसा मिजाज है। हमारी जो बातचीत का भी आधार रहा या जो रिश्ता रहा, वो कि हम क्या कर सकते हैं, किस चीज में बेहतर हो सकता है, किस चीज में जा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी साथी लोग जो हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपके सवाल जो रहे वो उस विषय से संबंधित रहें, और दूसरे किसी क्षेत्र की चीजों को हम ना लें। हम जो बाबा अपना व्याख्यान देंगे, उस क्षेत्र से जुड़े जो आप जो उनसे जानना चाहें, समझना चाहें, वो हमारे पास एक बड़ा सीखने का अवसर है। आप सभी साथी लोग जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक जो मैं एक बस छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात पे विराम दूंगा, फिर हम सभी लोग बाबा को सुनेंगे। ये कोविड से पहले की बात है, तो मैं बाबा से बात करना चाह रहा था, तो फोन लग नहीं रहा था बाबा का। अब वो फोन तो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें ISD पैक था नहीं। तो अब मैंने बाबा को एक ईमेल डाला कि इसके अंदर ये मेरे पास जो नंबर है, इसमें फोन तो जा ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने ईमेल किया कि आई विल कॉल यू टुमारो। और फिर दूसरे दिन जब बाबा का फोन आता है, तो उसमें एक रोबीली जो आवाज आती है, जिसको मैं इशारा करना चाह रहा था कि मैं सैम पित्रोदा बोल रहा हूँ। उनके जो ये एक जो फ्रेज था, एक जो ये लाइन थी, उस लाइन के अंदर जो करेज था, जो जोश था, जो उमंग था, जो चीजों को जो बदलने की जो ताकत थी, जो उत्साह है उनका लेके। और मैं आप सभी को बता दूं कि 4 मई को बाबा का 80वां जन्मदिन था, तो बाबा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और ये हमारी सबकी तरफ से। और ये हमारा सौभाग्य, हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। और फिराक साहब का था कि लोग तुमसे रश्क करेंगे, हम अश्कों, जब उनको समझ में आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आने वाले समय में जब हम किसी को बताएंगे कि था, जब हमने सैम सर को सुना था, उनको देखा था, तो लोग हमसे ईर्ष्या करना लगेंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए बाबा का फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस समय में से समय निकाला। और बाकी सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप अपने साउंड को म्यूट कर लें। सबको म्यूट कर दिया। जी जी बाबा, ठीक है। आप ओके। किसी भी भाषा में जो आपको अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे भी आप बोलना चाहें, बात रखना चाहें,
हम सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। जी अश्विनी कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, ग्रीटिंग्स फ्रॉम शिकागो। यहां सुबह के 7:30 बजे हैं और आपने जो आज मुझे मौका दिया ईश्वर शर्मा मेमोरियल लेक्चर के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कठपुतली से जो स्वागत किया गया वो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने उसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक है 2 साल की बेटी ग्रैंड डॉटर, एक है 6 साल का ग्रैंड सन और एक है 11 साल की ग्रैंड डॉटर, उनको हम कल ये बताएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली आर्टिस्ट को और अश्विनी शर्मा जी को कि उन्होंने इस बारे में सोचा और एक नया आइडिया लगाया। मैं प्रयत्न करूंगा हिंदी में बोलने का, लेकिन एट टाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजी एंड ऑल्सो लैक ऑफ प्रैक्टिस। छोटी छोटी बातें करनी हो हिंदी में और गुजराती में हम बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन कभी जो भाषण देना हो तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम सोचते हैं इंग्लिश में। अनफॉर्चुनेटली हमारा विषय ऐसा है कि लास्ट 55 साल से हम इंग्लिश में सोचते हैं और हमें जरा थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करना पड़ता है। एक तरफ से दुख की बात है ये कि हम इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते, और दूसरी तरफ की आदत हो गई है, तो इट इज बेटर at times if I speak in English because then I can express myself better. हमने ईश्वर शर्मा जी के बारे में सुना, उनका परिचय हमें मिला। हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आप हर साल उनका मेमोरियल लेक्चर करते हैं और इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाते हैं। हमें भी बुलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय हमने दिया है कि टेलीकॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो बहुत ही ब्रॉड, वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके बारे में एक दिन तक बात करें तो भी सब चीजें कवर नहीं हो सकती। सो हमें 10-15 मिनट में उसके बारे में बताना है। हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन पहले से माफी मांग लेते हैं कि जो पूरा जस्टिस नहीं कर सके उस सब्जेक्ट को, तो इसकी वजह है समय। बहुत सारे लोगों ने खूब सारा योगदान दिया है इस मुसाफरी में। हजारों लोगों ने कठिन काम 40-50 साल तक किया, तब आके हम सब यहां दूरसंचार में खड़े हैं। ये कोई एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिकल बॉसेस, लीडर्स, सबने योगदान दिया है।
Telecom history in India is very old. It basically started in 1850 when telegraph was introduced in Calcutta during British Raj. Unfortunately, all colonial masters provided infrastructure to further their personal objectives of ruling the population, controlling and managing governance. Telecom for a long time was seen as a luxury. Only rich and officers could afford. During independence in 1947, we had very little telecom infrastructure, hardly about 200,000 telephones. जब हम टेलीकॉम के सीन में इंडिया में आए in 1980, when I gave a presentation to Mrs. Indira Gandhi, then Prime Minister, and said that telecom and IT will change the face of India. Remember, this was about 42 years ago. To me, that was a beginning of planting seeds for digital India. उस वक्त मिसेस गांधी ने हमें एनकरेजमेंट दिया. उनकी वजह से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स शुरू हुआ. उस जमाने में फोन कनेक्शन लगाने के लिए 10 साल 15 साल लगते थे. हम जब अमेरिका आए 1964 में, तब तक हमने कभी टेलीफोन का यूज नहीं किया था, क्योंकि हमारे घर में टेलीफोन था नहीं, और जिनके घर में टेलीफोन था वो बहुत रिच लोग थे, तो हमारे दोस्त हो नहीं सकते. सो हमने पहली दफा टेलीफोन अमेरिका में लगाया. इंडिया में for 650 million people then in 1980, we had 2 million telephones. उस वक्त सब टेलीफोन इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, और मिसेस इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया थ्रू सरीन कमेटी कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के रास्ते टेलीकॉम का भविष्य सुधारेंगे. उस वक्त CIT अल्काटेल के साथ एक डील की गई, जिसमें डिसाइड हुआ कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज बनाएंगे. लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री में हमारी दृष्टि से, वो था मिसेस गांधी का डिसीजन टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स. 1985 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पॉलिटिकल विल दिया हमें कि आप लोग सब आगे जाके डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया को ऐसी पोजीशन में ला दे कि जिससे हम पूरी टेक्नोलॉजी हमारी टैलेंट से, without any support from foreign partners, we can develop. So Center for Development of Telematics was created to build human capacity, indigenous development, local production, Indian strategy to improve access to telecom as opposed to telephone density, rural telecom, building software, and all of the things that really require
us to plant seeds in right places at the right time. On one hand, political will was very important, which Rajiv Gandhi provided. Domain expertise was very important, which I had because of my work in US. And we had huge amount of young Indian talent coming from IITs and other great universities who really gave their best to make it possible. But designing product was one thing. We had to use that product in a big way to create STD-PCOs, our own manufacturing facility, our own rural exchanges, and at the same time we had to privatize telecom, which was very unique idea in 1980s. It was not easy to think of telecom privatization. We started with corporatization of telecom in terms of MTNL, VSNL, set up a telecom commission as an independent entity with autonomy like Space Commission, Atomic Energy Commission. At that time, we had 550,000 employees in telecom, 27 unions. As the first chairman of the Telecom Commission, my job was to really expand telecom substantially, but not expand labor. It was a very difficult task. Labor unions were fighting. But we had learned that to do these things, we needed a different organizational architecture. From the success stories of atomic energy, space, there were lessons to learn. We had similar success stories in India in agriculture, green revolution, milk revolution, and we had to create a telecom revolution. So we learned lessons from these four: atomic energy, space, agriculture, milk, and started to mobilize human talent, really prepare for the next generation. Then, as I said earlier, we had 2 million telephones. It used to take 10 years to get telephone connection. In a short span of 40 years, which is very short for a nation, maybe very long for individual. Today we have 1.2 billion phones. We are a nation of a connected billion. We generate $200 billion worth of software service export every year, year after year. We are globally recognized as the IT powerhouse. We have our own big companies like TCS, Infosys, Wipro, and many others. Our young, talented Indians are all over the world in IT industry, from IBM to Google to Microsoft, leading these multi-billion, trillion-dollar companies. All of this has roots in what we tried to do in Rajiv Gandhi era in digital communication. We excited thousands and thousands of young people, empowered them to go into IT industry, build better universities, better education infrastructure, and provided a path with great deal of hope and aspirations to young people from middle class, lower middle class families. And a lot of these people, because of their job in IT, have been able to lift their families out of poverty. And I am also one example of that. So journey has been long,
exciting, interesting, exhausting, but empowering. India today can proudly say that the seeds we planted 40 years ago have really put us in a very different position. We have huge foreign exchange reserve. A lot of credit goes to IT. But in the back of IT, other industries also succeeded, like auto, pharmaceutical, and others. The idea was to really give this a new shape to Indian talent, Indian capabilities, with focus on indigenous development, local industry. Then came mobile telephony in mid-90s. But all the groundwork for that was done by Telecom Commission in first 3 years. We decided to go to GSM, privatize mobile, and many companies came forward. And ultimately today we have giants in Jio, in Vodafone and Idea, in Airtel, in BSNL. These are massive global companies with huge capabilities. So today, telecom has become pervasive. It is used by farmers in rural India, government, rich. It is used for entertainment. It is used for polarized politics. It is used for education. And telecom has changed everything in India. But we have a long way to go. Today, with great deal of pride, I can say that in telecom, we are as good as anybody else. And we could be better. We provide telecom services of the world class at very low cost. And credit goes to our Indian entrepreneurs, policy makers, regulatory authorities, government. And now the challenge is to use this technologies, which can be basically packaged as hyperconnectivity. To me, hyperconnectivity is all about smartphone, fiber optics, artificial intelligence, big data, analytics, robotics, machine learning software, crypto, NFTs, cloud computing. All of these technologies are now coming together as digital platforms. Social media. There are some good things and there are some bad things. But the bottom line is that information technology brings about openness, accessibility, connectivity, networking, democratization, and decentralization. Hyperconnectivity brings about democratization of knowledge, education, information, decentralization of decision-making because of the cellular architecture, and demonetization of services. Uber is a classical example of demonetization of services. Hyperconnectivity is about content, context, communication, co-creation, collaboration, cooperation. It requires a whole different mindset. And now the challenge going forward is to further connect rural India, which is still left behind, like in everything else, education, health, and all, and begin to use telecom not just for polarized politics and political discourse and entertainment, but also for development of agriculture,
health, infrastructure, education, social services. So the real challenge going forward can be summarized in two areas. One is enhancement of connectivity using new technology like 5G. So convert in the next 5 to 10 years entire Indian network to 5G and connect all parts of India. We have a program for National Knowledge Network, which has worked well. We have a program to connect all our districts and panchayats to optical fiber. That also is working late, but it's in process. The challenge is to connect everybody to 5G and then create environment to take advantage of this new technology to expedite the process of development in India. But that requires whole new thinking. It requires better focus on democracy, decentralization. It requires focus on institution building, scientific mindset, encouraging civil society. And all of these things are very critical to benefit from hyperconnectivity. Hyperconnectivity is all about empowering individual, and it is antithesis to authoritarian mindset. Hyperconnectivity is antithesis to centralized architecture. And this is my concern going forward. That will India promote decentralization, collaboration, cooperation, co-creation? Will the politics of India take advantage of the hyperconnectivity to more centralize or decentralize? To control or collaborate? These are big challenges world over, and India is no different. I wrote a book called Redesign the World recently. It is all about the power of hyperconnectivity to restructure world order. And same kind of challenge exists at a national level. E-governance is a classical example. How do you provide better e-governance to really reduce interference from government and empower people to expedite the process of modernization and development, as opposed to monitor people, prohibit them from doing what they are supposed to do, and curb free speech? These are big challenges. Social media has been used to promote lies. How do we prevent that? So the challenges are huge, and no amount of debate on this is going to give us clear direction. We need commitment to certain values. We need commitment to truth, trust, love, diversity, inclusion, freedom, justice. If we don't have commitment to these things, and we want to promote lies instead of truth, hate instead of love, mistrust instead of trust, control instead of collaboration, we will misuse this technology, which will not be in the interest of the people of India or people of the world. This is where I've been spending most of my time nowadays, to really understand the power of digital citizenship. What does it mean to be a digital citizen? Where are your loyalties? What do you value? These are very complex issues. It needs completely different mindset. And I'm worried that we don't have that kind of mindset today. We still have 19th century mindset, 20th century processes, and 21st century needs and possibilities because of hyperconnectivity. So I can go on and on, but I could say
in summary that the journey has been long, interesting, and thousands of people contributed to this journey. If I give you a list of 10, there'll be another list of 10 who are equally important. So my compliments and thanks to everybody who participated in this journey in their own way. The contribution of young talent has been enormous. Rajiv Gandhi's political will was the key. Growth in telecom, mobile has been phenomenal, and that credit goes to Indian entrepreneurs. Software export, credit goes to Indian entrepreneurs and policymakers. So to realize the potential of all this, you need a lot of communication, coordination, collaboration. And we have a long way to go. We have planted seeds. We have 5G in front of us, and we have a potential to build new India using hyperconnectivity. But that will require focus on democracy, human rights, freedom, justice, decentralization, new economy, inclusion, and many other things. And this will require to change national conversation from petty politics to new development, new possibilities, new potential. Young in India will have to learn to move away from polarized politics to really nation building. And that is the task for India for next 50 years. Thank you. धन्यवाद बाबा, आपने इतने कम समय में पूरे एक उस इतिहास को समेटा है और हमारे सामने एक फ्यूचर का भी एक खाका रखा है उसके अंदर। और यहाँ हम में से जितने साथी इसको सुन रहे हैं और जितने साथी इसको आगे सुन पाएंगे यूट्यूब के जरिए और बाकी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, तो मुझे लगता है कि बाबा इसी में से ही आपको एक ऐसी यंग टीम मिलेगी जो अलग अलग बैकग्राउंड की, जो कुछ अपने जीवन में लीग से अलग हट करके सोचेंगे। वो राजनीति के लिए नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ बेहतर करेंगे। जैसा आपकी जो पुस्तक है जो अभी मैं जिसका जिक्र करना चाह रहा था, एक पुस्तक ड्रीमिंग बिग जो 2015 में हमारे सामने आई, और एक पुस्तक जो लास्ट ईयर आई थी रीडिजाइनिंग द वर्ल्ड। तो उस रीडिजाइन के अंदर बाबा यहाँ से आपको बहुत से ऐसे साथी सभी लोग मिलेंगे जो अपने अपने डोमेन से इसके अंदर योगदान करेंगे। और जो आपने जो इतिहास को दिशा दी है, जो हिंदुस्तान को आपने गढ़ा, जो बुना है, कि उसको बुनने में, उसको गढ़ने में, उसको बनाने में आपको यहाँ से यंग टैलेंट, ऐसा यंग टैलेंट आपके साथ मिलेगा। मोबाइल फोन, ये कुछ साथी, हाँ, तो ये आपको इसके अंदर सहयोग बाबा यहाँ से सभी साथी लोग मिलेंगे। और आपने जो ये सपना दिखाया है, जो आपने एक रास्ता ड्रॉ किया है, लीग से जो हटकर आप चले हैं और आपने उस काम को करके दिखाया है, तो उस आपकी उस टीम के अंदर, उस लीग से अलग हटकर चलने के अंदर जो यहाँ हमारे तमाम साथी जो मौजूद हैं, उससे एक प्रेरणा लेंगे और कुछ बेहतर करेंगे इस देश को बुनने के लिए। जहां तक आपने बुना है उसको और आगे और बेहतर कैसे उसके अंदर रहा जा सकता है, कैसा बेहतर हम हिंदुस्तान बना सकते हैं, जिसमें आपने जो वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यूज की बात करी है, लव होगा, हेट्रेट नहीं होगा, इंक्लूसिवनेस होगी, एक्सक्लूसिवनेस नहीं होगी ऐसे हिंदुस्तान में, उसमें कंपैशन होगा, उसमें इंटीग्रिटी होगी, ट्रूथफुलनेस होगा, ट्रस्ट होगा। ऐसा हिंदुस्तान गढ़ने के लिए यंग जो ब्लड है वो बाबा बिल्कुल अपने उसके पर है, उसके अंदर कुछ करने का कुछ एक आइडियलिज्म उनके पास है। हर कोई अच्छा करना चाहता है अपने देश के लिए, समाज के लिए,
परिवार के लिए कि एक जैसा हमारे फोर फादर्स ने जो हिंदुस्तान बनाया है, हम उसका बेहतर हिंदुस्तान आने वाली जनरेशन को सुपुर्द करके जाएं। ये सभी का बाबा एक ख्वाब है उसके अंदर। तो इन सब बिंदुओं को बाबा आपने इस इतने कम समय में इन सारी चीजों को आपने समेटा है। तमाम साथी लोग हैं, वो अपने सवाल, अपना परिचय देंगे, फिर अपना सवाल रखेंगे बाबा से। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बताऊं कि इस स्मृति व्याख्यान में बाबा हम क्या करते हैं कि हर बार जो कोई बदलाव जो कर रहे हैं, जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत दूर जो लोग रहते हैं, जो उनको नहीं देख समझ पाते हैं, उनके कार्य को नहीं देख पाते हैं, ऐसे हम बाबा एक या दो लोगों को चुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो अभी चूंकि ये डिजिटल है, लेकिन उनके सम्मान की जो एक फॉर्मेलिटी, उनका मोमेंटो, उनकी जो एक शोल रहता है, वो सारी चीजें और एक छोटी सी अमाउंट उनकी। तो बाबा ऐसा हमारे बीच में एक नूर भाई हैं बाबा, नूर कलंदर जी हैं। वो बाबा भालू नचाते थे पहले, कलंदर हैं। और नूर मोहम्मद, वो टोंक जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने बाबा, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, पूरा जीवन भर भालू नचाया उन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे जाके। लेकिन वो अपने समाज में महिलाओं के लिए, उस समाज के लिए काम करने के लिए वो आरा तारी का काम करते हैं। वो आते हैं और उसके ऊपर कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाते हैं उनसे उसके अंदर, और बिना कोई पैसा लिए हर जगह ऐसी वो एक चारपाई जैसी एक 4x4 की एक वो आता है, वो मशीन रखते हैं, वो काम करवाते हैं उस पे। तो एक तो बाबा जो रियल उन्होंने पिछले 30-40 साल से जो ये काम में वो लगे हुए हैं, अपने जब ये भालू जब जमा करवाए तो उसके बाद से उन पूरे कलंदर सब बिरादरी के अंदर आरा तारी का, अगर आप बूंदी इसमें टोंक जिले में जाएंगे राजस्थान में, तो आप देखेंगे जो एक बहिर बस्ती है कलंदरों की, उस पूरी बस्ती में महिलाओं के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो एक तो बाबा उनका हम चाहेंगे कि आप उनको सम्मान के तौर पे आप उनके लिए कुछ कहेंगे। और एक बाबा रॉय डैनियल है, रॉय डैनियल हैं, वो रहने वाले केरल के हैं, लेकिन पिछले उन्होंने 17 वर्षों से राजस्थान में इन्हीं घुमंतू समाजों के लिए जो तंबू डेरे के अंदर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके शिक्षा के सवालों को, स्वास्थ्य के लिए उनके डेरे में जाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो अपना घर बार एक चाय के काम से चलाते हैं, वो अपनी चाय सप्लाई करते हैं, जो चाय पत्ती आती है। और वो पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं बाबा यहाँ पर राजस्थान में रह करके। 2 उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, वो भी उनके साथ जाते हैं। तो इन 2 लोगों को बाबा हमने अब की बार इस सम्मान के लिए चुना है, और उनके जरिए और चाहेंगे कि हम आगे ऐसे लोगों के साथ और सम्मान कर पाए। तो हर वर्ष बाबा हम 2 लोगों को चुनते हैं। तो एक तो है कलंदर नूर मोहम्मद, और दूसरे हैं बाबा रॉय डैनियल जी। तो हम चाहेंगे बाबा आप 2 सब इनको पहले ये करेंगे कि पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे? पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे बाबा, उसके बाद में। हाँ, तो पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ये बाद में करेंगे एंड में। जी So जी, ठीक है। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप साथी में से जिनका सवाल हो आप अपना परिचय देते जाएं और अपना सवाल आप करें बाबा से। लेट अस बी ब्रीफ सो वी ऑल कैन कवर मोर क्वेश्चंस। जी, थैंक यू। निशांत एंड मानसवी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। अश्विन जी ने अच्छा बोला। आप, मैं बाबा इसमें एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य को लेके आपने इस देश में, क्योंकि आप सूचना क्रांति के जनक कहे जाते हैं, है ना, और आपने जिस उद्देश्य को लेके ये दूरसंचार के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, क्या आपको लग रहा है कि इतने सालों बाद भी वो सही दिशा में जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दिशा में कभी कभी कठिनाइयां आती है। तो हम कठिनाइयां से गुजर रहे हैं, क्योंकि झूठ बहुत फैलाया जा रहा है। लेकिन देश मुड़ गया है, वो सही दिशा है। हमारे देश में 120 करोड़ फोन लगाए गए, वो सही दिशा है। उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे।
So I am very happy where we are. I'm very happy with the fact that we have 1.5 billion phones. We use this technology to बाबा आपका म्यूट हो गया है शायद. So I think overall मैं कह रहा हूं कि I'm very happy. Thank you. Thank you, Baba. Thank you. Manasvi. Next. Hello, sir. हाँ बताइए. Hello, sir. It's really good Yeah. to see you here. Thanks for blessing us with your time, sir. Sir, I have two questions. First one is, how are we going to deal with the climate change problem that we're facing right now? Well, Say it again. technology has That's its implementation. Climate change. climate change. Okay. Yeah, देखिए, technology climate has its implementations. Yeah, climate change is a very complex issue. It is really very different from communication. Of course, communication has a role to play, but climate change is all about energy and not communication. Climate change is about how do we use energy, what is the source of energy, how much energy, what impact it has on the carbon footprint, how it affects our overall warming. So I think it's a totally different subject. It requires whole different conversation. Well, Global actually, I warming. wanted to focus on the crypto sector and its contribution to climate change. Recently, Well, we all know China that has crypto banned the requires a lot of cryptocurrencies. energy. Yeah. And, if you look at the total energy requirement, crypto is very insignificant part. Okay, it is insignificant part. Ignore the fact that Okay. Hello. Yes, I can hear you. I said crypto is a very insignificant part today of the larger energy equation. yeah, the second question comes from poverty. Actually, India has a lot of poor people, and we can't send them technology to all of them. Yes, there is growth in that sector, but we still have to improve. How do you suggest we can do that? Well, it's like everything else, in poor parts of the world, there is always lack of communication, lack of water, lack of education, lack of road. That's what poverty is defined. That's how poverty is defined. So you have to use technology to really uplift large number of poor people. When that happens, you will see the impact of technology. Until then, that's given. Okay. Well, yeah, it's some of the tragedies of our time. डॉक्टर मोनिका मिश्रा, डॉक्टर मोनिका जैन हैं बाबा भोपाल से. तो मोनिका जी अपना परिचय दीजिए, अपना सवाल कीजिए. नमस्ते. सर, आपको पहली बार तो सुनना हमेशा ही सुखद होता है, और आज आपने जिस टॉपिक को लिया है, वाकई जैसे अश्विनी जी ने कहा है कि आपने एक हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक का पूरी चीजों को कवर किया है. सर, बस मैं एक चीज जानना चाहती हूँ. मैं भोपाल से हूँ. सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी मेरी सोसाइटी का नाम है, जिसके थ्रू हम रूरल सेक्टर्स में कुछ काम करते हैं, स्पेशली ट्राइबल सेक्टर्स में. तो जो आपने अपने अभी सेशन में एक बात कही है कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का माइंडसेट अभी नहीं है. तो वो माइंडसेट वाकई हम भी फील करते हैं कि काफी सारी चीजों के लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं. तो एज अ साइंस कम्युनिकेटर मैं अपना क्या रोल प्ले कर सकती हूँ कि लोगों का माइंडसेट डेवलप हो और लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करें, जो नई टेक्नोलॉजीज और भी आने वाली हैं. आपको लिखना है टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा. आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस कम्युनिकेटर कैन चेंज द सोसाइटी. Your job is to really change the mind of the people by saying, start thinking logically, rationally. Don't get hung up on religion. Rise beyond belief to facts. If somebody says that vaccine is important and science says that, take vaccine. They don't believe
in some blind faith that cow's urine is going to take care of COVID. So there are three fundamental things that I would like someone like you to promote today. One is scientific mindset. Things based on facts, figures, proven science, and think logically, rationally, and not irrationally, emotionally. Reason properly. And म्यूट है listen with आवाज नहीं जा रही अपनी हाँ सॉरी आप be open, accept other people's viewpoint, and be inclusive and not exclusive. Don't judge people based on race, religion, caste, color, gender. That's what scientific thinking is all about. Second, tell people that it is important for institutions to function properly. Today, we have lost faith world over in major institutions. Institutions are captured by political bosses, where judiciary is no longer independent, media is no longer independent, universities are no longer independent, and science journalists must say that you got to make our institutions independent, autonomous. And you got to have space for civil society. In every community, independent people like you have an opinion and should be expressed, should be promoted. Those are the simple things you can do. And it's a lifetime of work. Good luck. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir. I really wish you a great health. निशांत सक्सेना जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी निशांत जी अपना परिचय देके आप सवाल पूछें। हाँ, धन्यवाद अश्विनी जी and respected sir, thank you so much for your wonderful talk and it was great to learn how a visionary approach leads to such a kind of wonderful outcomes in future. तो सर मेरा जो क्वेश्चन था आपसे, जैसे आपने अपने लेक्चर में बताया कि वैसे मेरा नाम निशांत है और मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जबलपुर में वर्क कर रहा हूँ एज अ साइंटिस्ट. आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सर मैं ये जानना चाहता कि जैसे आपने जो बताया कि 20-30 साल पहले एक विजन देखा टेलीकम्युनिकेशन को लेके इंडिया में, which is giving the results today. And so मतलब next 2-3 decades में हमारा क्या vision होना चाहिए, where we can focus as a country, because still lot of people in our country are finding it hard to meet the basic needs like food, good quality of education and health. Because हम लोग भी यहाँ पे tribals के साथ काम कर रहे हैं, tribals की health पे काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि still people are away from those things. Yes, technology is reaching to them, but those basic needs are yet to be met for a lot of people in a respectable way. So हमें सर किस चीज पे हम focus कर सकते हैं for the next 20-30 years as a visionary where you can help us? That will be very great, sir. Thank you, Nishant. First of all, my congratulations to you for the kind of work you do. You know, when Ashwini Sharma asked me to talk at this Ishwar Sharma Memorial Lecture, I readily agreed because he said there will be a lot of young people. So I agreed because I thought it will give me a chance to talk to people like you. I don't get a chance to speak to a lot of young people, nor do I get a chance to speak people from remote areas that much, because a lot of my talks are abroad and in India, mainly audience from Delhi, Mumbai, Bangalore. So I'm delighted that today I can speak to Nishant. So thank you for being there, Nishant. The real challenge for all of us at a national level
can be summarized by focusing on new model of development, because the old model hasn't really delivered. Old model is based on centralization. So first we need a completely decentralized model of development. We need district level development. We need local community participation. We need local wisdom, local knowledge, and we need to empower local people. There is no sense in waiting for Delhi to give us direction, because they can't, they haven't done it. So if you are working in a tribal area, you got to take charge. Unfortunately, our systems are designed for top-down development, and we need bottom-up development. We need people like you worrying about decentralization of education, health, and food. If we focus on these three things, decentralize food production, respect local food, local soil, local culture, because what works in Bhopal doesn't work in Kerala. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. So we need to learn from other parts, but we really need to first focus on local talent, local capabilities, local soil, local water, local energy source, local talent. And if we focus on three things, food, which include nutrition, first, then health, and then education. If we do this for next 10, 15, 20 years, we'll create New India. New India is not going to be created from top down. It will be created from bottom up. It is not going to be created from stock markets. It is not going to be created by billionaires or unicorns or new startups. It is going to be created from ground up by local development. That would be my concern. Thank you. प्रेरित मिश्रा जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? Hello, am I audible? Haji, boliye, you are audible. First of all, thank you for recognizing me, and good evening, doctor. It is an honor to talk to you. Turn on your camera. Actually, there is some network issue. Okay, no problem. No problem. Thank you. So, yeah, I am doing my bachelor's in journalism and mass communication from D.R. Patil International University, Pune. And I have this question: how can we use communication and information technology in a better way, and how can we aware people to not spread fake news from these social media platforms and communication gadgets? Well, it is like knife. A knife can kill somebody, and it can also cut fruits. So social media is in the same category. Some people will misuse it. Most people will properly use it. But those you misuse get a lot of visibility. So it can only come from enlightenment, education, awareness, and character building. Those who you misuse, they need to really ask themselves, are they doing a public service? Are they hurting people or helping people? If they want to hurt people, they'll misuse it. If they want to help people, they will not misuse it. It's a very personal issue, and no amount of advice would help unless they themselves want to change. And also there is a problem with business model, where social media companies get paid more
for more clicks. So lies create more clicks. And there is also what I call unauthenticated behavior. People hide in the back of fake names and start trolling. If I said something, they'll twist it, they will lie, and they'll propagate that Sam Pitroda said this, it was wrong, and they'll create unnecessary debate, and hundreds of people will get involved, and then, it just, they mess it up. I can't worry about that. I can't help them. If they want to do it, they can sure do it. I have no control over it, but I can't get dragged into it. Okay. I mean, today's conversation can be completely twisted. And you can just have some kind of fake news that Sam Pitroda said this at Ishwar Sharma Memorial Lecture. What can I do? I can't do much. I know what I said. I know what the truth is. I know what the facts are. And that's all I can go by with. So it's a very personal issue. Thank you. Thank you, Doctor. अब्दुल शपूर जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल शपूर सिसोदिया जी, शायद वो नहीं है। आप भी से और किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना रेज करके, हैंड रेज करके आप otherwise we'll go to, जी बाबा। Okay. हाँ, यस बाबा। नूर मोहम्मद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, नूर मोहम्मद जी, आपका कैमरा में कुछ दो मिनट में आप बाबा से 2 मिनट में आप अपना वीडियो करिए। Any more questions? क्वेश्चन शायद बाबा क्वेश्चंस हो गए हैं। या डॉक्टर, जो मैंने बताया I'm the youngest one here. हाँ बोलिए। Dr. Pitroda, I'm the youngest one here. I'm 16 and I would like to ask you, what can I do to improve the future? Future of what? Well, IT sector in general. I want to revolutionize it. I want to make it more open and less moderated. Yeah, but study IT well and, be very active in IT. It takes time to change the future. Future doesn't get changed in 10 days. It takes 10 years, 20 years. Well, yeah, things compound to the future. But certainly there's something I can do at this stage, right? Sure. Absolutely. You can work on many things. It depends on what you want to work on, where you are based, what subject you want to take, because IT is also a very broad field, So yeah, thanks for blessing me with your time. Thank you. बाबा, नूर मोहम्मद जी और रॉय डेनियल जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बाबा उनके लिए कुछ। बिल्कुल जी। नूर मोहम्मद जी कहाँ हैं आप? और सर, मैं राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट में। I want to see your face. आपका वीडियो ऑन करिए नूर जी। आप हाँ जी, नूर मोहम्मद जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। ये नूर मोहम्मद जी हैं। सर जी, ये वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये हैं ब्लू शर्ट वाले जी। अच्छा, लगाइए वो तस्वीर तो लगाइए खाली। हेलो, वो आपकी तरफ से नहीं लग रहा है। यो आपकी तरफ से बंद बतला रहे हैं सर बच्चे। अच्छा, हमारी तरफ से तो चालू है, माइक्रोफोन चालू है, वीडियो चालू है। लिखा हुआ आ रहा है, you cannot start your video because the host has disabled it. अच्छा, तो वो तो आप करिए। शायद ये किया होगा कि इन्होंने जब कनेक्ट किया तब उस समय इन्होंने वीडियो वाला और ऑडियो वाला शायद उस पे वो नहीं किया, वीडियो इन्होंने कनेक्ट। ठीक है। आप बताइए नूर जी, आप अपने बारे में 1 मिनट में बाबा को बताइए कुछ थोड़ा सा। सर, मैं कलंदर मदारी समाज से हूँ और हमारा खानदानी पेशा जो था भालू का खेल तमाशा दिखाना और मदारी का खेल तमाशा दिखाना था।
जी। और जब पैसा ऐसा था तो एक गांव में हम रहते नहीं थे, डेरे तम्बुओं में एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। फिर बीच में सरकार ने वन्य जीव प्रेम के नाम पे कुछ ऐसे नियम बना दिए कि हमारे भालू चले गए, और जब भालू चले गए तो हमारे पास ना खेती ना कोई दूसरे धंधे का नॉलेज था। तो फिर ये आरा तारी का काम नए बच्चों को तो हम सिखा सकते थे, पुराने लोगों को तो नए धंधे में डालना मुश्किल था। तो ये आरा तारी के काम से यहाँ 200 परिवार हैं, उन लोगों को नए बच्चों को इस काम से जोड़ा है ताकि रोजी रोटी का कोई जरिया बन सके। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नूर मोहम्मद जी। बालू का खेल हमने देखा है जब हम छोटे थे तब, और वीडियो भी देखी है बहुत सारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो काम कर रहे हैं अभी सब लोगों को जगाने का, वो अच्छा है और करते रहिए। आई एम हैप्पी दैट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट योर वर्क, कि आपके काम के बारे में चर्चा हो रही है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। एक बार रोय डेनियल जी, रोय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा था। मैं अभी अभी आया केरल से। हाँ जी, मैं सफर में था, अभी अभी जस्ट उतरा है मैं अभी। ये केरल के रहने वाले हैं बाबा रोय डेनियल जी, और जो राजस्थान में काम करते हैं, और कोई एनजीओ नहीं है बाबा। सबसे बड़ी बात है, जिन भी लोगों को आप सुन रहे हैं काम कर रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत स्तर पे काम है। वेरी गुड, दैट्स व्हाट वी नीड। डेनियल का भी, रॉय डेनियल जी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू डू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कीप डूइंग व्हाट यू डू। वी नीड मोर एंड मोर पीपल लाइक यू ऑल, जी सर, at the ground level to do good work, and you will encourage other people, bring some more young people in the mainstream, educate them, train them, empower them, and set an example for them. Okay, so we thank you for all the good work you do. बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया, thanks. The beauty of India is that the person from Kerala works in Rajasthan. That is the India I want. थैंक यू। जी सर, जी सर, ठीक है जी। जी बाबा, आप हमारे सवाल हो गए हैं। टिकमनी जी, आप एक जो धन्यवाद ज्ञापन रहता है उसके बारे में कुछ, टिकमनी जी आप सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर जी। बाबा टिकमनी पटवारी हैं, ये हिंदी लिटरेचर से हैं, साहित्यकार हैं, और ये छिंदवाड़ा के अंदर आदिवासियों के बीच काम करते हैं वहां पर। वेरी गुड, थैंक यू। छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा मुझे पता है, छिंदवाड़ा, या गुड जी। बोलिए, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। नमस्कार सभी को। जी बोलिए। आज का ये जो वेबिनार हमारे संपन्न हो रहा है, निश्चित रूप से हम सभी प्रतिभागियों के सुनने के बाद में ये सामने आया है कि सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। हम बहुत ही हृदय से धन्यवाद देते हैं सैम पित्रोदा जी को, जो दूरसंचार इंजीनियर है, आविष्कारक हैं और उद्यमी हैं। और आपने बताया कि कैसे भारत में जनसंचार का प्रचार प्रसार हुआ, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ में किस प्रकार नई तकनीकी के सहारे हम दूसरी चीजों को सरल सहज बना सकते हैं। जो तकनीकी का प्रवेश मानव जीवन में हुआ है, उसने भारत ही नहीं वरन समस्त विश्व में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि हम शून्य से लेकर शिखर तक की जो हमने यात्रा तय की है, उसमें तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। सर, हम सभी प्रतिभागियों की ओर से आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारा ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सारे कठपुतली कलाकारों को, जिन्होंने प्रारंभ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ नूर मोहम्मद कलंदर जी को, रोहित डोनियल जी को, और बहुत ही शुरुआत सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु उमा जी को धन्यवाद देती हूँ, और समस्त प्रतिभागियों को जिन्होंने अपना समय देकर इस वेबिनार को सफल बनाया, और साथ ही धन्यवाद अश्विनी शर्मा को जिन्होंने इस वेबिनार का संयोजन किया। और सैम पित्रोदा जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेरित और प्रभावित हैं, और हम सभी पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी बाबा, अश्विनी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी बाबा, थैंक यू बाबा, प्रणाम।